Our today's topic of discussion is the calculations of these four thermodynamic quantities in isothermal conditions if expansion occurs of an ideal gas. So what happens in case of expansion? We study in case of expansion already that in case of expansion, when any gas expands, its volume increases. Now, there are two paths through which expansion occurs. The expansion occurs through isothermal conditions or expansion occurs through adiabatic conditions. Next, further, the expansion occurs may be reversible expansion or may be irreversible expansion. So today we are going to discuss about this expansion in case of reversible process. So how the process of expansion occurs in case of reversible process. So what happens? ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੈਸ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਥਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸਿਮਲੀ lesser than the internal pressure of the gas. So ये जड़ी condition है एक किसदी condition है reversible process दी ये वाला की लिखा हुआ है कि isothermal expansion of gas can be carried out reversibly by placing the center of gas in thermostat. What is thermostat? Thermostat is the device to maintain the temperature by turning the switch of heat off or on. It means क्या thermostat जो वाला device है जिसके नाल आपा temperature नू की करना है constant करना और आपा isothermal conditions ले रहे हैं it means temperature की होगा constant होगा so आपा जो जेडी गैस दी expansion करनी है उन्हों आपा हमेशा किस दे विच रखांगे thermostat दे विच ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸਿਮਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਵਟ ਫਰਦਰ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫਰਮ ਵੋਲਿਊਮ V1 ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ V2 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੈਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ then during expansion of gas at constant temperature the internal pressure of gas decreases but the process is reversibly so ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ external pressure ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸਿਮਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਰਵੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ means expansion taking place extremely slowly because we are doing the system in reversible process ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ slowly ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ so that system remains in thermodynamically equilibrium ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਰਕ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ by heat absorbed by the system from thermostat why it is so we are doing this because we have to maintain the condition of isothermal process ਦੇ ਵਿੱਚ temperature constant ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ thermostat ਤੋਂ heat absorb ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ heat ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ for doing this work of expansion. So this is the theoretically how we explain the isothermal expansion of an ideal gas in case of reversible process. The next is how we mathematically calculate the work of expansion. So the expression for work of expansion means first of all we calculate the work in case of expansion of an ideal gas in case of reversible condition.
So you have to suppose the pressure of gas within a system that is P. Okay. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸਿਮਲੀ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ। सो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू होगी इंटरनल प्रेशर माइनस स्मॉल चेंज इन प्रेशर। ठीक है जी। सो इसके जो डीपी है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। दिस इज बिकॉज द एक्सपेंशन प्रोसेस अकर्स वेरी वेरी स्लोली इन केस ऑफ रिवर्सिबल कंडीशन। सो इस करके जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू ए वाली होगी। उस तो बाद हैगा small amount of work done by the system when its volume increases by an infinitesimally amount। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸਿਮਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸਿਮਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੀਸਿਮਲੀ इंक्रीज मींस dv इंक्रीज होगा। So this is the expression for small amount of work done by the system because we are dealing with the expansion process। उस तो बाद है अगर थोनों find out करना total work by the system when its volume increases from V1 to V2। उस तो पहला वाला देखो रोजे इस दे विच की कितना होया, इन्हें जो सॉल्व करोगे तो की बनूंगा माइनस प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम प्लस small change in pressure into small change in volume। Now these two quantities इन्होंने अपन neglect कर सकते हैं। Why it is so? Because this is a very small quantity and it is again multiplied by very small quantity। So this whole quantity is neglected in comparison to this term। So small amount of work done simply किधर इक्वल हो जाएगा pressure into small change in volume। Now the total amount of work done जो अपना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लार्ज इंक्रीज हो रहा फ्रॉम V1 टू V2। सो तुसी पढ़िया होगा इंटीग्रेशन आप यूज करते हैं उस टाइम। सो ये किया इंटीग्रेट कर रहे हैं आप फ्रॉम लिमिट्स V1 टू V2। नाउ किया अप्लाइंग दिस कंडीशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस PV is equal to nRT। So from here find out the value of this pressure। Suppose it is equation number 2, it is equation number 1st। Put the value of pressure from equation 2nd into this equation 1st। After putting the value of pressure which is nRT upon volume here, what happens? Now we have to integrate with respect to volume। ठीक है जी। So जेड़ा n है r है ये already किने constant है and we are dealing with the isothermal conditions। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब टेंपरेचर भी की हुंदा कांस्टेंट होगा। सो टेंपरेचर भी आउटसाइड दी ब्रैकेट है जेड़ा वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਗਾ 1/x ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ log। व्हाट इज दिस log? दिस इज नेचुरल log। सो नेचुरल log ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ln ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ln ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ V1 ਟੂ V2 ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। नाउ यही जेड़ा वर्क ऑफ एक्सपेंशन है जेड़ा आपा फाइंड आउट कीता कितना है जी, ये जेड़ा बिलो लिखा होया माइनस nRT log V2 upon V1। एक रिलेशन हुंदा नेचुरल log इज इक्वल टू 2.303 into log हैविंग बेस n। सो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करांगे तो जेड़ा वर्क है वो दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। किते ही आऊगा माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 upon V1 और इनू तुसी 2.303 दे नाल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो मींस 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1। okay, so these are very important expression that you all should remember। On the basis of these formulas there are a lot of numericals given in your book which you have to solve।
ठीक है। इस तो बाद की करना हुण आप एक्सप्रैशन बना रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, वी कैन कन्वर्ट दिस एक्सप्रैशन इन फॉर्म ऑफ प्रेशर हियर। सो तुसी पढ़िया होगा Boyle's law. According to this law, at isothermal condition, P1V1 is equal to P2V2, where P1 initial pressure, P2 P1 initial pressure, P2 final pressure. Similarly, initial volume, final volume. And from here, V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. Put the value of V2 upon V1 into this expression. Minus nRT log of P1 upon P2, or minus 2.303 nRT log P1 upon P2. So work done in a reversible process we already study is always maximum work. So ये वाला जड़ा work आऊगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ maximum work भी लिख सकते हैं, because ये ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं reversible work. So ये वाला work ही होगा जी maximum work होगा. Next, expression for delta U means expression for change in internal energy. We are dealing the process having ideal gas. So ideal gas ਦੇ ਵਿੱਚ internal energy is a function of temperature only. Okay, and we are doing the isothermal process, so temperature remains constant. Temperature constant होगा and internal energy सिर्फ फंक्शन है टेम्परेचर का, सो इंटरनल एनर्जी भी की होगी कांस्टेंट होगी. इट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 0. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट इज एंथैल्पी चेंज. सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ H. H is equal to U plus PV, means delta U plus delta PV, and we all know PV is equal to RT or nRT for 1 mole of nRT होगा रे for n moles of gas. So इस दे विच हम की करांगे delta U plus nR capital ने delta T. Now delta U दी वैल्यू की इक्वल है 0 दी, ठीक है. एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी की होगा 0 होगा. सो डेल्टा टी दी वैल्यू भी किदे इक्वल है 0. इट मींस जो डेल्टा एच है ਉਹਦੀ वैल्यू किदे इक्वल होगी 0 ਦੇ इक्वल होगी, ठीक है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन केस ऑफ रिवर्सिबल कंडीशन. ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ऑलरेडी याद करने ने, because these are very important. Okay, so एक फोर्थ जी टर्म है ओदी वैल्यू फाइंड आउट करी रहेगी. What is that? That is expression for Q. What is Q? Q is heat absorbed. So according to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Q is equal to delta U minus W. Now its value is equal to 0. So Q दी value equal होगी जी minus work दे. So Q is equal to minus of work, and work already minus है. इदा मतलब Q दी value equal हो जाएगी nRT log, sorry इथे होगा natural log V2 upon V1, or it is equal to 2.303 nRT natural log V2 upon V1.
It means what happened here from this expression, which is Q is equal to minus of W. It means कि होगा दोस्तों, all the heat absorbed is used completely in doing the work of expansion only. Okay class, so this is how we calculate these quantities in case of isothermal